Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So today, repo rate is reduced by 0.5%. Now, one of the question comes in mind: why this does not convert into immediate reduction of interest rate on loan products? What are the reasons, and why bank require time to transmit this reduction to ultimate borrowers? Now, to understand that, you have to understand what is the source of funds for the bank. The lending is normally given out of funds raised from various sources, and one of the major sources deposits. Then own capital of the bank, and if they have temporary shortfall, they borrow from Reserve Bank of India, and that money is available through repo rates. Now, what is the position today? As on date, banks are not borrowing from Reserve Bank of India. So, any reduction of interest rate by RBI does not lead to any cost reduction at the hands of bank. Okay? This is only a long-term measure. When banks will require the funds, then only they will be able to save this cost. As on date, there is no saving at the hands of bank. Rather, they will get lower interest on the money that they are placing with Reserve Bank of India. So immediate gainer is RBI. So RBI has to pay less interest to bank on the money that they are now taking from banks being surplus money. As on date, banks are having surplus money, and on daily basis they are parking with Reserve Bank of India. So repo rate reduction will not immediately reduce the cost of funds. This is only a comfort for coming days when they may borrow a part of their requirement. So real cost reduction will come how? The repo rate is a rate that will set tone in the market for future interest rates. So now onwards, the first step by the banks will be they will start reducing the interest rate on deposits. The earlier deposits, they have to continue to pay the higher interest, so no cost reduction on the existing deposits. The only comfort will come in shape of fresh deposits if rates on deposits are reduced. So this cost reduction will come gradually, not on a single day. So whatever deposit will be matured and renewed at a lower rate, that will save the interest cost. And whatever will be the interest cost saved during a month or in coming month, they will pass on to the customer by way of interest reduction on loans, not immediately. So you can't expect immediate reduction of interest rate on loans. But yes, over the period of time, the banks may reduce the interest rates in coming days as and when their cost reduction starts setting in. So now first step will be casualty on fixed deposit holders. They will get lower interest in coming days. So first will be the cost saving from deposit holder, and this cost saving will be partially set off to reduce the cost of borrowing by the borrowers. So relief will be there, but with a time lag. The real relief will start coming in from September 2025 when CRR will be reduced. When CRR will be reduced, the money that will be made available to the bank will save the cost immediately, because right now they are not getting any interest on that money. The moment that money is released, the banks may be deploying that money somewhere to get some income, and that income comfort will give more cushion to the banks to reduce the interest rate. So repo rate reduction coupled with CRR reduction will ultimately reduce
the transmission of interest rate to borrowers, but this may take 6, 7, 8 or 9 months to be fully feel at the borrower end. So borrower may get the loan interest rates in tranches, not immediately. In a month, bank may reduce 0.05, another month 0.1, another month 0.05. So in 5-6 months time period, they may like to pass on this 50 basis point reduction to the customers so that their profitability is not affected. So if they carry out immediate reduction of interest rate, banks' profitability will be hit and they are already under pressure due to lower growth of deposit and lower growth of credit. So immediately it is not positive for banks. For long term, it may be positive, but maybe after 6 months, maybe after 8 months, when credit growth will set in. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आप में से काफ़ी लोगों के मन में प्रश्न है कि आरबीआई ने रेपो घटा दिया आधा %, क्या लोन के रेट इमीडिएटली गिर जाएंगे? इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ट्रांसमिशन. इंटरेस्ट ट्रांसमिशन इमीडिएट नहीं हो सकता, उसके कई कारण हैं और इसको हम चर्चा करेंगे. सबसे पहला कारण क्या है कि बैंक जो लोन देते हैं वो उसके कौन से पैसे में से देते हैं? वो पैसा होता है जो लोगों का डिपॉजिट है या बैंक का अपना कैपिटल या नेटवर्थ है, या अगर ज़रूरत पड़ती है तो रिज़र्व बैंक से वो उधार लेते हैं. तो जो रिज़र्व बैंक से वो उधार लेते हैं सिर्फ उसमें से लोन नहीं होता है, इसलिए अगर उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है तो उसका इमीडिएट इफेक्ट लोन के इंटरेस्ट रेट पे नहीं आ सकता. जो मैक्सिमम खर्चा है बैंक का ब्याज का वो है डिपॉजिट्स पे जो हम ब्याज देते हैं, वो इमीडिएटली बचेगा नहीं अभी बैंक का, क्योंकि जो एफडी मैच्योर होती जाएगी और अगर बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट घटाते हैं तो जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मैच्योर होता जाएगा और नए रेट पे बनता जाएगा, केवल उतना पैसा ही इंटरेस्ट का बचेगा बैंक को. जहाँ तक रिजर्व बैंक के रेपो रेट रिडक्शन का सवाल है, उससे अभी कुछ नहीं बचेगा बैंक को, क्योंकि अभी बैंक आरबीआई से उधार ले ही नहीं रहे. आज की डेट में आरबीआई को दे रहे हैं बैंक्स, सरप्लस हैं, तो बल्कि इससे अभी उनको इमीडिएट तो नुकसान होगा, क्योंकि जो पैसा उन्होंने आरबीआई को दिया हुआ है उस पर उनको ब्याज कम मिलना शुरू हो जाएगा इमीडिएटली. तो अभी तो क्योंकि एकदम उनको ब्याज की कोई सेविंग नहीं होगी तो वो इमीडिएटली लोन पे रेट नहीं घटा सकते हैं. लोन पे इंटरेस्ट रेट वो घटाएंगे धीरे धीरे करके, हो सकता है 5 से 6 महीने इस पूरे ट्रांसमिशन को लग जाए, क्योंकि जैसे जैसे पुरानी एफडी मैच्योर होती जाएंगी और नई एफडी कम रेट पे आती जाएंगी, जो वहाँ से ब्याज बचेगा केवल उतना कंपोनेंट ही वो लोन्स पे घटा पाएंगे, सारा नहीं घटा पाएंगे, क्योंकि मोस्टली लोन पोर्टफोलियो फ्लोटिंग रेट पे होता है. तो जैसे ही आप इंटरेस्ट रेट घटाते हैं वो पुराने लोन पे भी लागू हो जाता है और उससे बैंक को काफ़ी नुकसान हो सकता है. तो इसीलिए इंटरेस्ट ट्रांसमिशन में टाइम लगता है. अभी सबसे पहले नुकसान होगा जो लोग बैंक में एफडी बनाते हैं, उनको धीरे धीरे बैंक एफडी के रेट गिराने लगेंगे और जो वहाँ से बचत होगी पैसे की वो उन लोगों को एडवांटेज मिलेगा जो बैंक से उधार लेते हैं. तो जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है इमीडिएटली नहीं गिरेगी. इसका असली फ़ायदा आएगा सितंबर 27 के बाद, जब सीआरआर कट शुरू होगा, क्योंकि जो सीआरआर से पैसा रिलीज़ होगा वो पैसा ऐसा है कि अभी बैंक को उस पर कोई ब्याज नहीं मिल रहा. जैसे ही वो पैसा रिलीज़ होगा वो पैसा कहीं ना कहीं बैंक डिप्लॉय कर पाएंगे और उस पर आमदनी कर पाएंगे. तो इंटरेस्ट कट ऑन एफडी और सीआरआर का जो रिलीज़ होगा मनी, वो दोनों मिलके बैंक को कंफर्टेबल बनाएंगे इंटरेस्ट रेट रिडक्शन के लिए और लोन का इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए. इमीडिएटली बैंकों को इससे फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होगा, क्योंकि अगर वो इमीडिएट कुछ भी कट करेंगे लोन के ऊपर और उनकी कॉस्ट नहीं घटी एफडी के ऊपर, तो वो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन श्रिंक ही होगा, बढ़ेगा नहीं. और इसीलिए बैंक्स टाइम गेन करते हैं ताकि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन की श्रिंकेज है उसका इफ़ेक्ट कम से कम आए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम से कम इफ़ेक्ट हो. केवल जो बॉन्ड प्राइजेज में इंक्रीज़ आएगा
इंटरेस्ट रिडक्शन का मतलब है बॉन्ड प्राइजेस का बढ़ जाना। तो अगर कोई बैंक अपने एग्जिस्टिंग बॉन्ड को बेच के उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहेगा तो वो ट्रेजरी प्रॉफिट आ सकता है, बट काफ़ी बैंक इसको वेंचर नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो वो बुक कर लेंगे प्रॉफिट, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो गए तो ट्रेजरी में लॉस आना शुरू हो जाएगा। इसलिए वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। कुछ बैंक हो सकता है टेम्परेरी मिसमैच को पूरा करने के लिए उस रास्ते को भी अपनाएं, पर फॉर नाउ अगर आप सोच रहे हो कि कल से ही लोन के इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ग्रेजुअली होगा। हो सकता है किसी महीने में 0.05% इंटरेस्ट कम कर दें, उसके अगले महीने 1.1% कम कर दें, उसके अगले महीने में 0.05 कम कर दें, करते करते 6, 7, 8 महीने में आधा % या 0.3% या 0.4% तक का कट कर दें, क्योंकि अभी इससे कोई बैंक को कॉस्ट कटिंग नहीं होगी। रेपो कट से बैंक को अभी इमीडिएट कोई फ़ायदा नहीं होगा, केवल उस पीरियड में फ़ायदा होगा जब बैंकों को आरबीआई से उधार लेना पड़ेगा। एज ऑन डेट कोई उधार लेना नहीं पड़ रहा है, जो पुराने उधार है वो सब पेड ऑफ है, डेली बेसिस पे वो लेते हैं और अभी तो सरप्लस में है। गॉड ब्लेस यू ऑल।